नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। मैं मेरे गुरुजी श्री बीवी चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत प्रणाम करती हूं। आज हमारे एनडीएस हेल्थ सेंटर पे गेस्ट आए हैं और गेस्ट इसलिए कहेंगे कि पेशेंट नहीं है, ये स्पेशली हमें लंदन से मिलने के लिए आए हैं और लंदन से इंडिया में यहाँ पे दिल्ली पे आए थे। दिल्ली से अहमदाबाद आए हैं और अहमदाबाद स्पेशल टाइम लेके यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेके यहाँ पे मिलने आए हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये भी पीएचडी किए हुए हैं, ये भी डॉक्टर ही हैं। तो डॉक्टर परिन जी, आपका हमारे न्यू डाइट सिस्टम में बहुत बहुत स्वागत है। आप बताइए, आप क्यों हमें मिलने आए हो? Thank you very much. Namaste सबको हमारा. My name is Dr. Parin Somani. I'm an international motivational speaker and academic scholar. I'm a writer, author, and I do a lot of work for the community on a social base. The reason मैं आपको मिलने के लिए आई because हमारी बेटी जो लंदन में है और हमारे साथ पारिन हमारे साथ अभी आई है और हमारी दूसरी एक लड़की नादिया, हमारी 3 बेटी है। तो हमारी दूसरे नंबर की लड़की she is your follower. She loves following your vegan raw vegan diet. And my other daughter Parin, she also follows your diet. पारिन, आपका भी स्वागत है हमारे न्यू डाइट सिस्टम की चैनल में। बहुत बहुत अच्छा लगा आप मम्मी को यहाँ पे लेके आए हो। फिर आपसे भी बात करेंगे, लेकिन पहले मम्मी से बात कर लेते हैं। जी, आप बताइए फिर। सो मेरी बड़ी जो नंबर फर्स्ट नादिया जो मेरी बड़ी लड़की है और हम दोनों एक ही लेवल के हैं। हमको खाना बहुत पसंद है, तो वी लव आवर फूड एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट व्हेन माय नंबर 2 Zarna and my number 3 daughter Parin follows the raw vegan diet, which is very difficult for me to maintain because खाली फ्रूट और वेजिटेबल खाने से कहाँ से शक्ति मिलेगी, कहाँ से अपने को स्ट्रेंथ होगा, बिकॉज हमारा काम दिमाग का है। आई गो एंड स्पीक टू द ग्लोबल पीपल इन द ग्लोबल सोसाइटी टू मेक अ डिफरेंस in the world. So if I'm not strong and if I don't have any strength, how can I help the world? How can I help the society at large? But my daughter always inspires me and she motivates me. Okay, mommy, vegetable and fruits are given by the God. We should make sure you should eat it. But when my daughter knew, okay, I'm already in India, the one who said, mommy, why don't you go and see Dr. Zarna? So मैंने बोला, why would I go and see her? Because I'm a personality that people come and see me. So my daughter said, mommy, she's a doctor and she's a raw vegan, and I think you should be inspired because we both are telling you, but it's difficult for you to understand. But I'm telling you, you should go and see Dr. Zarna. आपको स्पेशली हम मिलने के लिए बहुत होप से we came here. Thank you so much. I remember I did ask you before I came here, Dr. Zarna, I'm planning to come to Ahmedabad. So please let me know what are your timings. So you're very generous and very cooperative over the phone and supported me. How I can come and see you, and you gave me send me the link how I can connect with you before I come and see you here. And the most beautiful thing, what I am inspired by you, that when I ask you that I would love to see you, but what are your consultation charges, how do you motivate the people, how do I follow you, and you are very generous and very humble by saying to me, हमारा कोई consultation charges नहीं है, this is my मानव सेवा, and I would say that only the blessings is my consultation charges. So that really inspired me to, wow, is a big hasti, is a big personality, and you are helping so many people around the world, and you have the way of saying to me that really touched me. So I told my daughter, definitely I want to see her. If you would have told me how much you charge, still I would have come. But I would be inspired. But this has touched my heart to bring me from London to India and India to Delhi, and I'm traveling from last good few months for my global education mission, what I'm here for. And I say, especially, I'm going to come and see Dr. Zarna. That's made me come and see. Now I would like to know more. How do you motivate, and how can I help myself, and how I can be inspired by going on a raw vegan diet? परिन जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम है कि डॉक्टर सब बोलते हैं कि ये फॉलो करो, कि आपकी डॉटर्स जो है वो तो ऑलरेडी रो वेगन है ही, लेकिन वो सब क्यों इतना आपको बोल रहे हैं कि मम्मी आप भी ये फॉलो करो, तो इसका क्या कारण है?
मुझे 2000 में I had ameloblastoma, which was a cancer I had attacked in 2000, and then I lost my vision. Again, I got recovered after having my big surgery, which happened in UK, in London, in UCL hospital. 2010, I was treated back again to the same attack of the cancer, but this time it was a severe cancer, and I was being told by the doctor in UCL hospital that this time we have to remove 3/4 of your face, and it was a very scary moment for each and everybody in the family to face a challenging thing what was going to me. And I decided that, and my husband decided that I don't want to go for the surgery, and I'm going to leave the way I am. But I found one of a good friend. She suggested me that I should go to Patel in Kerala and see the doctors and look at the Ayurveda option. And it has really helped me a lot. And right now I'm living from 2010 till 2021 without the medication. Back of my mind, I know there is something there, but it's a spiritual power has supported me to help the society, because I have got two mottos in my life. The first motto I have got that I want to help the society at large until my last breath. And the second motto I have got that I want to make a positive global change in the society at large. How do I make it? I have to make sure I look after myself. So that is why my daughter are after mommy. Hey, mommy, you have to change your diet. You need to make sure you are on a raw vegan, so that can help you to live long. And I want to live not just for myself. I want to live for my beautiful daughters, who I'm inspired with my 3 lovely daughters. I'm inspired with my husband, and he helps me as well. And I'm very much inspired to work and support the society at large. How do I do that? I want to fulfill my 2 mottos. So for that, I want to help the society. To help the society, I need to make sure my body is nice and clean, and I have that much strength to support. And this is the temple. Our body is a temple. And to look after the temple is our duty. It's a spiritual house of God. This is a Kaaba. Put it down that this is a house of God, and you need to purify your thoughts, purify your mind, purify your body. Going on a vegan diet, yes, it is the right way, but hard way. How can I do that? Give me a solution. How can I go to that? जी, उसके लिए तो माइंड को ही सेट करना पड़ेगा कि पूरे शरीर को हमें क्योर करना है, तो सिर्फ एक टंग को समझाना है कि ये फूड अच्छा है, ये फूड गलत है, क्योंकि गलत फूड खाने के बाद इतने सारी बीमारियां आती है और राइट फूड खा के सारी बीमारियां चली जाती है। और आपका मोटो है कि पूरे वर्ल्ड को, आपको सबको पॉजिटिविटी फैलानी है। और आप 10 साल पहले भी आपको कैंसर हो चुका है, अभी रिवर्स नहीं लाना है, बच्चों के लिए जीना है, समाज के लिए जीना है, और हमें मिसाल कायम करनी है कि ये जो हमारा बॉडी है उसको हम ही क्लीन रख सकेंगे और कोई नहीं क्लीन कर सकेगा। तो इसके लिए भी हमें सबसे पहले ये शरीर जो है वो मंदिर है, इसको हमें अच्छा रखना है। तो इसके लिए बेस्ट थिंग मैंने आपको बताई कि एनिमा। तो अभी आपको मैंने ये बॉक्स दिया था, वो आप लाइए। मैं जी, तो ये एनिमा के बारे में हमने इनको समझाया है। आज तक तो इन्होंने जो भी किया नहीं किया, वो तरीका सही था नहीं था, वो सब नहीं जानना चाहेंगे, लेकिन आज से हम ऐसा करेंगे कि जो भी गलत खाया था, सॉरी आपकी एज बताओगे? आप तो बहुत छोटे लग रहे हो, और आपने कहा कि 3 बेटी है मेरी, कोई मानेगा नहीं। यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड वेरी क्यूट। तो आपकी एज जी 51 की एज में अगर ये जो पकाया हुआ भोजन खाके भी इतना हेल्दी ये दिख रहे हैं, तो आप सोचो कि ये अगर 100 साल तक ये जो रॉ फूड है ये फॉलो करेंगे, तो यही एज इनकी यहीं पे स्टिक हो जाएगी, मतलब कि 51 से 52 नहीं होगी। तो आपको इससे से ज्यादा बेनिफिट लेना है, तो ज्यादा से ज्यादा हमें सबसे पहले एनिमा करना है, दूसरा है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग करना है, और तीसरा है रो फूड। लेकिन आप इतने सालों से
पकाया हुआ खाते हो तो आपको सबसे पहले ये करना होगा कि एक टाइम का कच्चा एक टाइम का पक्का। जी मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि अभी आपको जो पकाया हुआ भोजन है उसका भी क्रेज है और उसको भी आपको खाना अच्छा लगता है, उसमें से कन्वर्ट होके आपको ये रो डाइट पे आना है। वैसे तो आपके घर में ऐसा एटमॉस्फेयर है कि बेटी तो रो फूड पे ही है, तो आपको भी ऐसा करना है कि पूरे दिन का जो शेड्यूल है उसमें शाम तक आप रो फूड खा लो, मतलब कि हमारा ब्रेकफास्ट है, हमारा लंच है, हमारा स्नैक है, वो रो फूड खा लो और शाम को डिनर में आपको जो भी खाना हो वो पकाया हुआ खा सकते हो, लेकिन उसमें भी जो ग्रेन होता है वो 20% ही लेना है और 80% जो है वो प्लांट बेस्ड खाना है। पकाया हुआ होगा तो चलेगा, मतलब कि आप सूप बना के ले सकते हो, वेजिटेबल्स बॉईल करके कुक करके ले सकते हो, वो सब कर सकते हो। तो वैसे आप चालू करोगे तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको आगे कहीं भी किसी भी डॉक्टर को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और वेट लॉस भी होगा और जो भी अंदर जो भी टॉक्सिन पड़े हैं शरीर के अंदर वो भी सारे रिमूव हो जाएंगे। जी तो I will इतना try. I will definitely try that, and I'm going to start looking the option which you या gave. ये एनिमा तो आपको लेके ही जाना है और ये तो अपने क्लीन करना ही है। तो ये सबसे अच्छी चीज है कि दुनिया के सारे रोग भगाने हो तो एक ही सॉल्यूशन है, एनिमा कीजिए। तो बेटा आपसे भी हम बातें करना चाहेंगे, आप कितने समय से रो वेगन फूड पे हो? Yeah, so I'd just like to introduce myself. I'm Parin. I'm a student at ECL, and I currently just met Dr. Zarna, who's been so lovely, and we've been talking about enema, Yeah. which was quite interesting. So I've been raw vegan for 5 years now. So plant-based, no salt, no sugar, no oil. At first it was very challenging, I must admit, but then over time I slowly adjusted and I'm loving it. I feel like I've got more clarity in my thoughts, I feel more energized, and it's been great, like my journey being plant-based, because what tends to happen is when you overcook food, you denature the enzymes and you're basically not eating food for energy and the vitamins and minerals. It's just dead food. So that's why I try and consume food that's in its most natural state, and so far it's been great. So speaking to Dr. Zarna has inspired me even more and taking this next level with the enema. So yeah, I've just been really intrigued, and she's been explaining it and she's been so lovely. So thank you for that. जी, और आप हर रोज जब भी मम्मी पकाया हुआ खाती है, अच्छा बनाती है, टेस्टी होता है, वो स्मेल अच्छी आती है, तो भी आपको 4-5 साल से वो फूड खाने का मन नहीं होता है? Yeah, so that's also a big thing. Everyone asks me the same question. So what do you eat? Like, do you not get cravings? And it's true, like from the smell, you know, as humans, we do like attract to the smell of food, especially like Indian food, dal bath and all of this stuff. But for me personally, I rewired my brain in a way where I don't feel the need to have these food, because it's kind of weighing out the pros and cons. Am I going to benefit from this rasmalai, for example? So that's why I more navigated to and gravitated towards the natural foods in its most raw form. So no, I don't get the cravings. So instead of sugar, I'll have jaggery. Like I'll have substitutes. Instead of normal refined salt, I'll have pink salt, Himalayan salt, or rock salt. Something that's the healthiest version of that. So I don't feel like I'm missing anything. आप 4 साल से रो फूड पे हो, तो कभी आपको ये अभी सारे पूरे विश्व में फैला है ये इन्फेक्शन का डर या फिर बीमारी का डर, डिसीज का डर, तो वैसा आपको कुछ भी बुखार आया या कुछ भी आपकी हेल्थ बिगड़ गई, ऐसा कुछ हुआ है कि रो फूड पे आने के बाद आपकी हेल्थ कैसी रही, वो भी आप जर्नी बताइए? Yeah, so definitely. I don't know, believe it or not, but I actually haven't been like ill and years now, like seriously ill. So when I used to eat everything, I used to have food poisoning and a lot of like health conditions. But since I've, transformed on this raw vegan journey, I feel like my health's been at its optimum.
I haven't really experienced any headaches or anything that I normally would have felt before transitioning to this lifestyle. So it has definitely benefited my health. And in terms of the coronavirus, eating, like having a McDonald's diet is really gonna call that virus to you, because what the virus eats is ultimately fried food and all these things that, like fast food. So that's what they feed on. So in terms of protecting yourself, especially during this critical period, trying to stay safe, we should really try and eat everything as healthy as possible. Like, you know, limited, like eating out should be at its limit, and eating home food and knowing what you're eating. And with that positive energy that you get whilst you're cooking, it really makes a difference. So, yeah. जी फरीन जी, मैं आपसे एक ये भी पूछना चाहूंगी कि आप इतनी कम, आपकी एज कितनी है वो बताइए। I'm 22. I just turned 22 on the 9th of March. So yeah. जी, तो ये अभी 22 इयर्स के हैं, तो आपने 4 साल से वेगन फूड पे हो आप, तो आपकी एज के सभी लोग चाय, दूध, छाछ, दही या फिर बटर या चीज, पनीर और आइसक्रीम इसके पीछे दौड़ते हैं, इसके पीछे पागल है, ये टेस्ट के पीछे सभी अपना शरीर को जो खराब कर देते हैं। तो आपने ये एनिमल प्रोडक्ट को त्याग कर दिया है, तो उसके बारे में भी बताइए कि आप इसके सब्स्टिट्यूट में क्या करते हो और उसको छोड़ के भी आपको कैसा रहा, वो बताइए। Yeah, definitely. So milk is and dairy products in general takes a large component in our lifestyle in terms of what we eat. So personally, I did a lot of research, and there's a lot of scientific evidence to show a correlation between dairy products like milk, for example, and cancer, especially breast cancer in particular. But there's a lot of controversy around that. So that's why I personally eliminated milk from my lifestyle. And I also watched a documentary, and it really just captured the corruption in the farming industry, and how they add pus and hormones. You're not getting any benefits as you were maybe 100 years ago. So in terms of how I have substitutes for this, I would have almond milk. So it's really simple to make this. Yeah. It's just 2 ingredients. Yeah. Just water and almonds. Yeah. But with the almonds, you have to soak it overnight, and then you peel it, and then you blend 1 cup of almonds peeled to 2 cups of water, and you literally just blend it. So it's just as simple as that. There's nothing added, no chemicals. You've made it at home. All that positive energy is just gone into the almond milk. And every time fresh. And it's fresh, exactly. So, and if in terms of you like it sweet, then you can add jaggery, for example, or you can blend some medjool dates, not glazed with any sugar. So make sure you read the package. So that's what I have. I have either almond milk or cashew milk, but I prefer almond milk personally. So whenever I'm making turmeric latte, that's what I'll have. Or my cereal, I'll make homemade granola without any sugar or any gluten, and that's what I'll have with the almond milk as well. So I highly recommend that. So if you do try it, just comment below how the recipe goes. I'd love to hear. जी, इन्होंने ये इतनी सारी अच्छी बात, इंग्लिश के हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं कि बहुत सारे डिमांड भी करते हैं कि इंग्लिश में भी बताया जाए। तो मेरी वीडियो तो है वो हिंदी में होती है, लेकिन इनकी फरीन जी की ये बातें बहुत सारे ऐसे साधकों को पसंद आएगी कि जिन लोगों को इंग्लिश में भी जानना होता है। तो इन्होंने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी कि सभी घरों में मैं सबको ऐसा बताती हूँ कि मम्मी फॉलो करेगी तो बच्चे फॉलो करेंगे। यहाँ पे पूरा उल्टा है कि बच्चे फॉलो करते हैं, मम्मी को हमें समझाना है। ये बहुत इजी बात है, हमने इनको अच्छी तरह से समझा दिया कि ये जो हमारा शरीर है वो टेम्पल है, टेम्पल के अंदर कूड़ा कचरा नहीं चाहिए। तो ये शरीर को क्लीन करना है तो एक ही चीज है, ये इससे क्लीनिंग करना है। ये भी अभी रॉ डाइट पे है, वेगन डाइट पे भी है,
लेकिन इनको भी अगर 100% अपना शरीर की जो देखभाल करनी है, जो भी वेस्टेज है बहुत पहले का, वो भी निकालने के लिए अगर एनीमा करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और मैंने यहाँ पे दोनों को समझाया है, दोनों एग्री हो गए हैं, आज से एनीमा ले जा रहे हैं यहाँ से और यही स्टार्ट करेंगे। तो बहुत अच्छा लगा परिन जी और फैरिन जी कि आप दोनों यहाँ पे आए, हमसे मिले और इतने सारे लोगों को भी आपका ये हमने जो भी समझाया वो भी उनको जानने को मिला। तो हमें बहुत खुशी हुई। आप जब भी इंडिया आए तभी यहाँ पे आना हमसे मिलने के लिए, और आप हमारे टच में रहना कि आपकी हेल्थ कितनी इम्प्रूव हो रही है और आपने कितना कितना फॉलो किया, कहाँ पे रुक गए तो आप हमें फोन करके भी पूछ सकते हो, हम आपको गाइडलाइन करते रहेंगे। तो आपको भी हमें कुछ भी पूछना हो तो सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हो। अगर मिलना हो तो अहमदाबाद के नारायणपुरा में हमसे शाम को 4 से 6 बजे आके मिल सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955, यही मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। तो अभी ये जो हमारे यहाँ पे गेस्ट आए हैं इनका भी शुक्रिया अदा बोल दे। तो thank you so much for having us and thank you for inviting. It was a beautiful experience for me to what you're inspiring, which my daughters have already been inspiring, but I think so this is added to her inspiration. And I would love to try this anemia and let's see how things works on it. और आप अभी आए तभी ये बोल रहे थे कि ये आपका बेटा है, ये आपकी बेटी है, वो बताइए सबको, वो क्या बोल रहे थे, मतलब कि मेरे बारे में आप क्या, आपने तो इतनी वीडियो हमारी देखी थी, तो आपको रियली में कैसा लगा कि वैसी हूँ कि कुछ अलग हूँ? No, because I thought you are a very when I was speaking to you, I thought you are very maybe a different age and you may be in a different age category. But when I looked at you, you are too young to have two grown-up children. So that makes me feel happy that how do you maintain yourself and keep yourself so fit and beautiful and pretty and a beautiful smile on you. Thank you. So that has inspired me that yes, I need to work on it and I need to be what I should be. And I should not be trying to eat all this junk which I enjoy, like my pav bhaji and rasmalai and biryani and God knows, that's my favorite food. But I think so I'm going to try my best, not promising at this stage. It might take me a while, but I'll take a baby steps, try with anemia and then we'll try with the raw vegan and we'll see how I progress and I'll update you. But thank you once again for inviting me and my daughter today. Thank you so much. It's been a lovely experience and I've learned so much from you. I'm also an yoga enthusiast, so you can follow my videos and find me on Instagram, which will be in the description down below. थैंक यू जी थैंक यू सो मच। आप हमारी वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, फीडबैक दो। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय, नमस्ते। नमस्ते।